थैंक यू वेदा जी, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले आप आए, उसके लिए थैंक यू। Okay, I think we should start. And then, yes, already I'm 4%. Yes. Namaskar. And this is third part, episode 3 of Conversation. Yes, and today we have, I think, a renowned young maestro, renowned one, Ram Prapanna Bhattacharya. एंड मुझे लगता है कि आई थिंक वो आए और उनके पास उनसे ही हम सब सुने। ठीक है, तो प्लीज वेलकम राम प्रपन्न भट्टाचार्य। नमस्कार, नमस्कार राम प्रपन्न। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং নমস্কার। টু ইউ অ্যান্ড এভরিওয়ান। আচ্ছা, কেমন আছেন আগে বলুন, কেমন আছেন? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, কেমন আছেন বলুন। आप कैसे हैं? हाउ आर यू एंड इन दिस कोविड सिचुएशन? प्लीज टेल मी। Let's begin with a little bit in English, and we will, go with Hindi and Bengali as it becomes Yes. convenient. Yes. As we know, for last 1.5 years, we are in a terrible situation, and which is going on, and we all are praying when there will be an end of it. In the second wave, as we have seen, we have lost so many people, so many friends, so many musicians, everyone, like from every sphere of our life. And I was also no exception. I was affected with COVID, and by grace of God and love and best wishes from everyone, I could recover from it. I think last month in May, I was hospitalized for a few days, but after that it has been a improvement. এখন আবার অলমোস্ট নর্মাল লাইফে ফিরে এসেছি। I'm doing all my regular work, music, teaching, and everything. Yes. So, রামপ্রপন্ন, এটা আমাদের বলুন। কাছে একটা বড় পাওয়া যে আপনি আবার সুস্থ হয়ে আবার ফিরে এসেছেন। মানে এটা একটা কি, কোভিডের পর, পোস্ট কোভিডের পরে অনেকেই অনেকটা সময় ধরে অসুস্থ হয়ে থাকেন, বাট থ্যাংক গড আপনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে একটু বলুন। প্লিজ টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর মিউজিক্যাল কেরিয়ার, মিউজিক্যাল জার্নি। প্লিজ সামথিং টেল মি, দেন উইল গো for a small performance from your side. আমি নিজের মুখে নিজের ব্যাপারে কি বলি? না না, আপনার শিক্ষা, আপনার শিক্ষা, very সাংগীতিক শিক্ষা, ইয়েস, সবকিছু very একটু বলুন। embarrassing. তো আমি তবু অল্প অল্প করে বলার চেষ্টা করছি। আমার জন্ম সাংগীতিক পরিবারে, যেখানে সঙ্গীত এবং আলাদা ডিফারেন্ট আর্ট ফর্মস, কেউ এটাকে প্রফেশন হিসেবে নেয়নি, পেশা হিসেবে নেয়নি, সবাই ভালোবেসে করেছে। তো আমার প্রপিতামহ রামেন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন ক্ল্যারিনেট এবং সারেঙ্গি বাদক, উনি বাজাতেন, ওনার শখে বাজাতেন, এবং শখে বাজাতেন, শৌকিয়া বা শৌখিন বললে অনেকে ভাবেন যে হলেও হলো, না হলো না হলো, এরকম নয়। খুব ডেডিকেটেড ছিলেন উনি। ওনার শাস্ত্র, বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের উপরে অসাধারণ দখল ছিল। আমার ঠাকুরদা রামকিশোর ভট্টাচার্য, উনি
চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন এবং উনি খুব ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। তো উনি গান বাজনা ভালোবাসতেন। আমার ঠাকুমা শোভনা ভট্টাচার্য, উনি সেতার ছোটবেলায় সেতার বাজাতে শিখেছিলেন, কিন্তু পরে উনি কন্টিনিউ করেননি। তো প্রত্যেকের মধ্যেই সঙ্গীত আর শিল্প কোনো না কোনো ভাবে ছিল, জড়িয়েছিল। তো আমার বাবা আমাদের অঞ্চলে থাকতেন ওস্তাদ আলী আহমেদ খান সাহেব, যিনি আলাউদ্দিন খান সাহেবের রিলেটিভ ছিলেন। ওনার সেতার শুনে বাবা ওনার কাছে সেতার শেখা শুরু করেন। তার আলী আহমেদ খান সাহেবের কাছে শেখেন, তারপরে ওনার প্রয়াণের পরে মুস্তাক আলী খান সাহেবের কাছে শেখেন, এবং উনি পণ্ডিত বকুল নাগ, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, পণ্ডিত ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, এনাদের সবার কাছে উনি চারজন ওনার সেতারের গুরু ছিলেন। আমি আরেকটু পেছনে যাই। আমার প্রপিতামহ খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, সঙ্গীতাচার্য গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, অমিয়নাথ সান্যাল। এই প্রসঙ্গে আমি একটা বলি, আমার গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী আমার ঠাকুমার মামা। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটা বললো যখন, আমার ঠাকুমার মামা কিন্তু গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী। তো সেই প্রসঙ্গে এলেন বলে আমার এই কথাটা বললাম। ওনাদের জন্যই আমাদের যে ক্লাসিক্যাল কলকাতাতে যে সেই সময় ক্লাসিক্যাল মিউজিকের, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে চর্চার যে বিস্তার পায়, এনাদের অবদান অনস্বীকার্য। তো ওনার শিষ্য ছিলেন যামিনী গাঙ্গুলি, তো তার কাছে আমার পিসিরা গান শিখতেন। আচ্ছা। আমার মাও ছোটবেলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা প্রত্যেক বাঙালি শিক্ষিত ঘরে যাওয়া হয়। Interrupting you, please tell with either Hindi or English. I think Thora Veda ji, रामानंद दीक्षित जी, दिनेश गोगना जी, सभी तरह पर्सनली और यहाँ पे भी कह रहे हैं थोड़ा आप हिंदी में थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा करके प्लीज. Sure. Okay. So just what I have mentioned so far is my great grandfather was a sarangi and clarinet player, not professional one, but he used to play with dexterity. My grandfather, grandmother, my parents, everyone is from different world of in academics and career, but they pursued art forms with their passion, and they want to ignite that particular thing within me. So my father initiated me into sitar in very tender age, around in I think age of 6 or 7. When I was 6 or 7, then I started. Is my voice audible? Is it clear? Clear. Okay. Yeah. But before that, I want to tell, if the family has some musical background and some cultural activity goes on, so we are very spiritually inclined family. In every evening in our family, we used to have kirtans. So that's why all the different songs were based on classical rags and raginis. So those were, I think, the first exposure for me into melodies. And also my father used to practice when I was, I think I was in my mother's womb from that time. So all those small things, I think, contributes into making of a music student or musician, whatever we can call it. My father, his contribution, my parents' contribution in my learning is immense. I think the most, and most part of my learning music, I have learned it from my father. He, actually initiated me. Not only initiated, I started performing only with his guidance. Even before going to any other guru, I started performing. So all the major rags, raginis, and before that, the techniques, how to hold sitar, the proper posture, right hand and left hand setting, and all those things, which are very crucial if someone wants to be in advanced stage. These basic things in music, classical music, as we know, these are very crucial, and he always has shown me the right direction from the day one. So I think that is the biggest I think that is the biggest contribution that I can think of today. And I remember every day he used to come from office, and from 8 p.m. to 10 p.m. He used to guide me. I used to practice, and I fortunately had
my tabla guru, teacher, who used to accompany me, he was scheduled to come once a day in a week, but he was so affectionate to me. His name is late Amiyo Kumar Datto. So he used to stay in our locality. He used to come almost 4 days of a week, and all these things helped me a lot to learn the basics and intermediate and advanced stage, how to play with tabla, how to sync with the laital. So all this groundwork, my father has done, and both had done jointly. Then, when my father was a little bit busy with his job, and he was thinking that he would not be able to give adequate time, which I would need at that point of time, he suggested me to. He actually took me to Pandit Soumitra Lahiri. I learned from him for a brief period, I think a year or couple of years or so. Because of my inclination for Itawa Gharana's music, the tradition of Ustad Imdad Khan Sahab, Ustad Inayat Khan Sahab, Ustad Vilayat Khan Sahab, I then went to Pandit Kashinath Mukherjee, who was younger brother of renowned film director Hrishikesh Mukherjee. ঋষিকেশ মুখার্জি ঋষিকেশ মুখার্জির ছোট ভাই হতেন, পরের ভাই। ঋষিকেশ মুখার্জি বড় ভাই ছিলেন, ইনি মেজো ভাই। So he learned, actually Hrishikesh Mukherjee himself used to play sitar in his younger days, and he used to learn from a blind disciple of Ustad Inayat Khan Sahab, Srinivas Nag, in Kolkata. So Hrishikesh Mukherjee used to learn, and then my Guruji was inspired by looking at his elder brother. So he also started learning from Srinivas Nag after his death. After Srinivas Nag's death, Kashinath Mukherjee, my Guruji went to Ustad Vilayat Khan Sahab, and he learned from him. And later he learned from Ustad Amir Khan Sahab, the vocalist, legendary vocalist. Oh. So I learned from Pandit Kashinath Mukherjee till his death in 2011. From 1997 to 2011, I have learned from him. In the meantime, I shifted to Pune for my work in the year of 2005. Then my, direct talim, that time we did not have this WhatsApp, Skype, and all these online lessons, and all these things were not there. Yes. And people of that period were also not very much comfortable with that. So there was a gap in my talim, face-to-face talim. Whenever I used to go to Calcutta, then only I used to get talim. So that was a problem. So my Guruji always suggested, we discussed, in Mumbai we have Pandit Arvind Parikh. So Kashinath Mukherjee, you see, a person is possessing such a big heart. He is suggesting his disciple, okay, you go to this person. He has collection of lot of compositions and many things which he has learned from Ustad Vilayat Khan Sahab. So you go and learn from him. I have never seen such a person in my life in the music world, where one guru is suggesting and giving permission. Okay, you go there. Only thing which he had in his mind is my progress and my development, which is very, very rare. Even in his generation also, it is very rare. No. Then I met Pandit Arvind Parikh ji, and he was kind enough to agree to share his knowledge and wisdom with me. And I started in 2005, and I have learned him till 2019. Okay. So this is the brief. This is the brief, outline of my learning period, and I'm still learning. Whenever my father comes here, we discuss, he guides, and self-learning is also another very crucial thing. After a certain point, music students and musicians do this by themselves. The whole life, you cannot just be dependent on face-to-face learning. At some point of time, once the musician, this is my personal thinking, people may differ. No, you are right. Absolutely right. Yes. Once gurus, the work of guru is to give the ability to introspect, realize, and adopt from others. So once the musician gains that ability in part or in full, then I think it is very important
to the Yes. self learning. Yeah, and this is the lifelong process. With Yes. There is no like in any academic career you will do 12th and then some degree, some MBA, blah blah, all those things, and after some time you will get some certificate. Then your learning process ends. Formal Yes. learning Yes. process ends, but here for the Yes. musicians, there is No, no. no The no whole life no is that kind of thing is. okay. Thank you, Ram Prapunna. So, Ram Prapunna, now हम क्या थोड़ी कुछ आपके पास सुनना चाहते हैं. मैं नहीं कहूँगी बिकॉज लेकिन थोड़ी बिकॉज सब ठीक है. लोग बैठे हैं फॉर दैट. ओके, श्योर. ओके, सो हम क्या सुनने वाले हैं राम प्रपन्नो फर्स्टली. मैं थोड़ा सा बिहार सुनाता हूँ. आई थिंक इट इज ओह, for this time it is appropriate. Little bit of यस, Bihar, if it is okay. यस. Just give me some time to just adjust the sound. Yes, please. Yes, in the meantime, thank you, BN Ghatak sir, for joining us. Thank you, Rajkumar Kotak, for joining us. Thank you, Veda ji, for joining us. Devashish da, thank you for joining us. Shumita Kakima, thank you. Gopal Bhaiya, thank you for joining us. Dinesh ji, thank you. And yes, Shogato Mitro, thank you. Ramanand Dikshit sir, thank you. Yes, so okay, so let's start. Okay, please share this live session तो बहुत लोग इसको सुन पाएंगे और देख पाएंगे. प्लीज शेयर. ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट. नो, ओके. And not audible. Yes, now audible. थोड़ा string, थोड़ा. No, 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 not audible now. Namaskar, Renuka ji, thank you for joining. Namaskar, Niyar Khandave ji, thank you for joining. No, uh, no, no, no. You please take your headphone. I think that's better. And now you are muted. No, your sitar sound is not coming. No, your voice is not coming. अचानक से voice चला गया क्यों? Sorry, I think Ram Prapanna ji ka again Ram Prapanna ji is rejoining. Please stay with us. I think some others and yes, Rajkumar Kotak ji from Mauritius. Please stay with us. I think some internet problem. Yes, वेदा जी, आपने ठीक ही कहा कि पूरा लाइव भी अगर हम सीख ले तो भी ये खत्म होने वाले नहीं है. यस, यस, यस. You please remove your headphone. Can you please remove your headphone from your laptop or something? From your device? हाँ, लेकिन क्या हो रहा है आपका? बातें भी नहीं आ रहा है.
कोई आवाज नहीं आ रहा है. Yes, yes, now it's coming. Now it's coming. Sorry everyone. Thank you.
থ্যাংক ইউ। অসাধারণ বেহাগ, অসাধারণ। এবং জাস্ট ইয়েস, ইয়েস, জাস্ট ইয়েস্টারডে আমি একটা রূপকের ওপর বেহাগ শেয়ার করেছি এবং আজকে আপনি এটা বাজালেন। দুর্দান্ত, অসম্ভব অসম্ভব ভালো, সাধু সাধু। আচ্ছা, রামপ্রপন্ন, আমাকে একটু একটা জিনিস একটু আহ, জানার আমার খুব ইচ্ছা, সেটা হলো এই যে স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট, এবং যারা সদ্য শিখতে শুরু করবেন ভাবছেন বা শুরু করেছেন, তো এখন এই করোনা যুগে ভার্চুয়াল লার্নিং আগেও ছিল হয়তো, কিন্তু এতটা বোধহয় পরিচিত ছিল না, যেটা এখন অনেক ইনস্টিটিউট আছে যেগুলো ভার্চুয়ালি শেখানো হয়। এবং সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ভার্চুয়াল লার্নিং, দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস? So what do for the beginners, what do you think? And आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि is it possible to learn virtually properly sitar, any instruments, string instruments properly through virtual mode? Right. Two things. I think music and string instruments were popular before also, even before the lockdown and before all the online things, because we have we already had this music being practiced across different continents. So many people are learning already, even before this lockdown thing. But now, after this COVID situation and after the lockdown, these online discussions, online performances, online forums, and online learning, everything has increased a lot. If you remember, even before the lockdown, we used to do Facebook Live, isn't it? But once the concerts, the hall concerts stopped because of this COVID norms, then it increased a lot because of natural reason. Learning online is little bit difficult, to be very honest. But if someone is not having any other option, I started teaching online in the year 2011. You will not believe. 2011. In 2011, that too also to a daughter of our common friend. I will tell you later. So, so I started in 2011, and you see, from different other countries, other continents, I already had students from just 2011 2012, from that time, and they are learning from me over online for almost 10 years by now. But most of them were learning sitar before and then came to me. So Just interrupting 10 years online at a stretch. I mean, वो 10 years से आपके पास ही सीख रहे हैं online, right? Right. Yes. Oh, yes. Yeah. Okay. Okay. But I initiated also, like people. They did not have any idea to how to hold the sitar, how to place their hands and the sitting posture and everything. For the adults, it is a little easier for us to do that over online, because whatever we communicate, they grasp that instantly, and there is less communication gap for the adults. They have good understanding. But for the kids, for the children, it is little difficult, particularly below, if they are below 10. It is very difficult to start from scratch. But in couple of cases, I have done that also, and getting some success. It is very difficult, but it is not impossible. You imagine someone who is staying in some remote location, be it in India or be it in some other country. They don't have any provision to learn from anyone. They don't have any teacher in their locality or in their city or in their province. So this is the only option they have. So I think this opportunity should be taken if both the parties, the student and the teacher, both have the sincerity and the honesty.
And for the kids, I think they need some presence of some their guardian during the session, because of the tuning. It is very difficult. So what I have to do is I have to listen to the tanpura sound, and someone else helps in the tuning, removing the pegs and all those things. For the kids, it is very difficult. In that case, presence of some guardian is required during the session. It is not impossible. Yeah. Some questions coming not here but in my messenger. One question ये है कि वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन जब बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं तो इज इट पॉसिबल कि प्रॉपर ट्यूनिंग की प्रॉपर वो ऑनलाइन ऐसे सीखना पॉसिबल है? कैन दे मैनेज टू फॉर ट्यूनिंग? बिकॉज गार्जियन को तो पता नहीं कि कैसे वो ट्यून करे. देखिए, हमारे फिल्म में एक डायलॉग था किसी फिल्म में कि ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है. डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ये इसका रिवर्स है. ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. अच्छा. It is just the reverse. It is difficult, but it can be done. So that's why I am saying, like for a kid of 6 years or 6-year-old or 5-year-old or 7 years old, it is difficult. If I say, sorry, just a moment. Yeah, like yes, tuning these two strings together, there are two problems. One thing is they cannot move the pegs. Yes. They don't have the understanding how much to increase and how much to decrease. Yes. How much to. Yes. That is because. So this is the physical problem, and the problem with ears, because their ears is not developed. They don't understand the difference of the tones and microtones and all those things. So what I have to do is I have to ask them to turn on the tanpura at their end. Because if the problem with the online sessions is, even now also, if I and you both speak together, we can't hear each other. It is we can hear each other only because there is a gap between one. So the signals overlap. So I cannot turn on tanpura at my end. If I turn on tanpura, I cannot hear the other side. So what I have to do is I have to ask them to turn on the tanpura in C sharp or whatever D, in whichever scale the instrument is, and I ask them to strum the strings. What they know is name of the strings, which is Nike string or Baj ka tar, kaun sa Jode ka tar, Gandhar, Pancham, or Kharaj, Laraj, Chikari, first Chikari, second Chikari. How do you manage the Khan actually? How do you manage to teach the Khan? Their guardian needs to help. So what I do with one of my student is his elder sister helps during the session. So she comes, she strums the strings, okay? I ask her, the tanpura बज रहा है पीछे और वो चिकारी बजाओ, फर्स्ट चिकारी बजाओ, वो बजा रहे. तो I ask them, okay, increase, decrease, okay, this much, not that, like, because she also can't understand. So I have to guide how much to increase and how much to decrease. Okay. And within it does not take more than 2 minutes to tune the entire instrument in this way. Initially, the person takes some time, 5 minutes, but within 2 minutes, we manage to tune the entire instrument. Not the third strings, I am saying. Third strings takes more time, because managing this sympathetic strings is a little bit difficult. But these strings, third strings also not difficult if someone does on regular basis. If you don't move these pegs get very hard. So nothing is impossible. If someone is having some willpower, it is possible. And that, not only that, what I try to do is, this is just I am helping them to do. I give some exercise, vocal exercise, to build the sense of tuning, so that they can understand if this is sa, this is re, this is ga. First thing what I suggest to do is turn on tanpura and sing sa re ga ma pa dha ni shuddha and sa re ga ma pa dha ni komal. First you have to understand, you have to have understanding of 12 notes. 12 notes before. So sa के जो पोजीशन है, वहां से रे का पोजीशन, कोमल रे का पोजीशन क्या है, शुद्ध रे का पोजीशन क्या है, कोमल का, शुद्ध मा, तीव्र मा. Yes, distance from sa. So once you have sa, the reference of sa, so that you can evaluate the rest of the notes. That is the first thing I ask them to do. Turn on tanpura and sing, not play sitar.
sing, you have to sing. Second thing, randomly choose the scales. In your mobile app, it is very easy. Or in Tanpura, Yes. electronic Tanpura, it is also very easy. Choose B, But B manually is flat. very different. Yes. Manually difficult. Choose B flat and try to sing sa along with it. Try to change it to random F. Match your voice with F. Change to G. Try to match your voice with G. So ability to match your voice with the Tanpura. So once you are listening to the Tanpura, or someone is listening to the Tanpura and matching the voice with it. So these two skills, once it develops, it helps to tune the instrument. आपका गाना छोड़ के हम कुछ नहीं है. गाना अगर नहीं आता है, अगर सुर का समझ नहीं है, तो सितार, सारंगी, सरोद कुछ काम नहीं. রাইট। আচ্ছা, অনন্ত চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করছে, যদি গার্জেনদের সুরের সম্পর্কে কিছুই না জানে তাহলে বাচ্চারা শিখবে কি করে? আমার মনে হয় আমি বোঝাতে পারিনি. আমি বলছি যে তানপুরা ওখানে অন করে আমি গাইড করছি কিরকম ভাবে কতটা কান ঘোরাতে হবে, কতটা নামাতে হবে. আপনাকে কিছু বুঝতে হবে না, আপনি শুধু আমার কথাটা শুনবেন, কথাটা শুনলেই হবে. This is my technique. Someone else might be using different technique. So I am guiding how much to increase and how much to decrease. If this is the point, so if it increases, then I have to take it down. I think we are going into much detail. We need to have some other seminar on this tuning. No, tuning. I think we should go to different subject. Okay. One question. I don't know. This is for this session, but someone asked me that if they want to start learning sitar, so अभी virtually तो कई जगह पे शॉप नहीं है, so वो कहाँ से एक सितार तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकता कि ऐप में नहीं हो सकता, so वो कहाँ से वो खरीद सकते हैं सितार को? Today sitar makers are very smarter than the sitarists. They make the sitar and they deliver through courier with proper packing and box and everything. So just you need to know the number and contact details of the sitar maker, and within if you want to have some ready-made sitar, you will get it within a week. And if you want to give an order, it depends on how busy the sitar maker is and how fast he can make the sitar for you. So now sitar cannot be online, but sitar purchasing can be online. Acha. Okay. So definitely we can get number or any If some for any information information, you just get in touch with me in my website ramprapana.com. There is my contact details given, my phone number, email address, everything is given. So for any help for purchasing sitar or anything related to sitar or music, I will try to help whatever the way I can. Please feel free to drop an email or call me or send me message. Yeah. Okay, so Ramprapurno, now please tell me something. ये मेरे लिए भी थोड़ी जानने की इच्छा है आपसे कि एक बिगिनर्स के लिए आप कौन सा राग को चूज करते हैं फर्स्ट? ये मैं सबको पूछी एक बार कि आपको क्या लगता है कि कौन सा राग फर्स्ट उनको सीखना चाहिए एंड क्यों? मुझे जो लगता है, जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने, जो बड़े बड़े लोगों ने जो सोचा और जिस तरीके से हम लोगों को सिखाया, हमारे भी पहले भी सिखाया गया, सबसे पहले एक संपूर्ण राग को लेते थे जिसमें 7 नोट है और जिसमें प्रेफरेबली शुद्ध नोट्स का इस्तेमाल ज्यादा है. अभी देखिए, बिलावल भी चूज किया जा सकता है और यमन भी चूज किया जा सकता है, जिसका मूवमेंट लीनियर हो, जिसमें चरक मतलब जिसमें ट्विस्टेड मूवमेंट और बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस, मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तो वो इजी होता है जो शुरुआत के लिए, स्टार्ट के लिए. जो वोकल में हम कहते हैं सपाट, वोकल में हम कहते हैं सपाट, यहाँ पे है हमारे इसमें भी सपाट कहा जाता है. सपाट मतलब सीधा, जिसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है जी, है ना. तो उस तरीके का संपूर्ण राग से शुरू करना बेहतर है. तो जनरली शुद्ध नोट्स से ये शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है. तो इसमें देखिए, बिलावल सबसे अच्छा है, लेकिन बिलावल में बहुत कुछ ट्विस्टेड मूवमेंट्स है, कुछ रागांग, फ्रेज बेस्ड जो अंग है, जो शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकता है समझने में. राग का जो इंट्रिकेसी है समझ में, रागांग का जो इंट्रिकेसी है समझ में. तो इसलिए ज्यादातर लोग यमन से शुरू करते हैं. मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, किसी को कोई काफी से शुरू करवाए. सो इट इज फाइन, लाइक एनी संपूर्ण राग.
we can adopt for teaching for the first time. जी 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 ओके, तो हम थोड़ा थोड़ा बहुत यस टाइम भी चल रहा है, हम थोड़ा कुछ सुनेंगे आपके पास से, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। देखिए, जब बजाना शुरू होता है तो थोड़ा ज्यादा का वो नहीं रहता है। देखिए, आपने थोड़ा बजाने के लिए बोला, इसलिए मैंने कितना बड़ा दिया। नहीं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा, मतलब थोड़ा ही इतना। कुछ फरमाइश है? what our audience wants to listen? यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे समवन ने लिखा कि कोई फॉर द रेनी सीजन, क्या आप, यहाँ पे मुझे लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा उन्होंने, फॉर द रेनी सीजन आप আপনি যে একটু মিউট করে দিন আপনার দিক থেকে যদি।
এবং আপনি বাজাচ্ছেন, বাইরে কিন্তু ভীষণ মেঘ ডাকছে আমাদের কলকাতায়। এটা মিয়া সাহেবের কামাল, আমার নয়। অ্যামেজিং অ্যামেজিং, সাধু 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 সাধু। মানে সত্যি মানে মানে কি হয় না, মানে হলোই না, মানে শুরু হতে হতে শেষ হয়ে গেল, মানে এটা খুব ধৃষ্টতা, বলাটা উচিত না। আচ্ছা, অনেকের নামগুলো আমি একটু নামগুলো বলি যারা যারা আজকে এখানে নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয়ই, বলুন বলুন। তিনি হলেন রাজকুমার কোটাক, দেবাশিস He is গুহনী he গঙ্গোপাধ্যায়। he is my Rajkumar Ji is my friend, and out of affection he calls me Guruji. He stays in Mauritius and he plays sitar. He is very good friend of mine, and he is a die-hard follower of my music. And Devasisda, what to say about Devasisda? We all know, whoever watches দেবাশিস, my live, whoever watches my live performances, everyone, Devasisda is popular among them. So he does not need an introduction. And আপনি কিছু বলুন যদি বলতেছেন না। হ্যাঁ দেবাশিস, আমি তো মানে দেবাশিস দা, আমি ওই যে বলার আমাকে দেবাশিস দা সব কটা বলে দিয়েছেন, মানে যে কটা লাগানোর দরকার ছিল, আহা বাবা, দেবাশিস দা কোনোটাই বাদ রাখেননি। আরো খুব আমি আমি ভালোবাসেন আর আর স্নেহ করেন আমাদের। হুম, আচ্ছা, রাজকুমার জি লিখেছে আই এম ব্লেসড গুরুজি। আচ্ছা রাজকুমার জি, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। দেবাশিস দা, দেবাশিস দাকে তো আমি জানি, দেবাশিস দাকে তো এটাতে থ্যাংক ইউ বলার নেই। বেদাজি, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস, অ্যান্ড বেদাজি প্রচুর শেয়ার করেছেন, থ্যাংক ইউ বেদাজি। বেদাজি ইজ ফ্রম ধন্যবাদ লন্ডন। বেদাজি। एंड মেনি रेणुका থ্যাঙ্কস। गंभीर जी, वाह क्या बात। बीएन घटक सर, थैंक यू। अच्छा, देवाशीष दा, संदीप शर्मा जी, थैंक यू। संदीप भाई भी मेरा स्टूडेंट है, मुझसे सीखते हैं। ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इज वेरी ओके, डेडिकेटेड सितारिस्ट। অনন্ত চ্যাটার্জি, থ্যাংক ইউ। জিয়া প্রকাশ জি, থ্যাংক ইউ। আর কিছু মেসেজ আমার এখানে আসছে না, এসছে অনেকে, মানে এক একজন এমন কমেন্ট করেছে এখানে আসছে, যাই হোক। ওকে, এই করার পর বেশি কচকচানি ভালো লাগে না। সো রামপ্রপন্ন প্লিজ, I think we are almost end to our session. Something something tell me about the music, जो लोग अभी घर पे है, जो लोग सीखना चाह रहे हैं और जो लोग आपसे सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ बताइए, और कैसे वो रियाज करे,
प्रिपेयर करे, क्योंकि सीखने के लिए भी कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। सो उसको प्रिपरेशन आपके साथ कैसे कनेक्शन मैंने कनेक्ट करें, सब कुछ थोड़ा डिटेल में बता दीजिए प्लीज। मेरा जो वेबसाइट है वो जरा आप आपके वहाँ पे लिख दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। आई थिंक यू कैन डू दैट, और लेटर आल्सो आई कैन शेयर इन दिस स्ट्रीम लेटर once the session ends. उसमें सारा डिटेल्स है वहाँ पे। ऑनलाइन सितार, ऑनलाइन ऑफलाइन सितार सेशन करके एक सेक्शन है, सो यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, एंड माय email address, phone number, and details are given there, so you can be in touch for the lessons or any kind of help for learning sitar or music, whatever little I know, whatever little I know, and I am learning, I will be happy to share with you. So this is something I wanted to say. And for learning classical music, as you know, even you can also tell me on my behalf how much dedication and how much involvement. I will not use the word sacrifice, because sacrifice we do for the thing which we don't love to do. So you have to, the person who is planning or to learn classical music, देखिए वैसे भी बहुत कम लोग हमारे क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए इच्छा रखते हैं और गेट इंटरेस्टेड। जो भी लोग आते हैं उनको हम भगाना नहीं चाहते हैं। आई एम नॉट टेरिफाइंग जो भी आते हैं उसका भी बहुत जल्दी रहती है कि ये सीखना है, जल्दी जल्दी कुछ सीख के चलो। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर वो डिफरेंट टॉपिक है, हम उसके ऊपर आएंगे। इफ यू इंक्रीज द जी 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 यस यस टाइम लेकर हम बात करेंगे उसको। प्लीज लेकिन सीखने के लिए और करने के लिए बाकी सब कुछ, इफ मेनी थिंग्स, इफ नॉट सब कुछ, जैसे जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको हम बोल नहीं सकते कि भाई तुम पढ़ना ये सब छोड़ दो और सिर्फ गाना बजाना करो, क्योंकि इसमें एश्योरेंस, करियर एश्योरेंस ये ऑलमोस्ट जीरो और नेगेटिव और कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नो गारंटी। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, वी कैन नॉट सजेस्ट और एडवाइस इन दैट मैनर। लेकिन इफ यू वांट टू डू pursue your academics or career and classical music, you cannot have anything else. तो क्योंकि आजकल का जो पढ़ाई है हमारे इंडियन सिस्टम में पर्टिकुलर, it requires lot of time and dedication and involvement also. And on top of that, if you are doing these two things which demand 100% of attention and involvement, then you have to be very careful. So पार्टी करना, टीवी देखना, ये करना, वो करना, all these things, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं ये सब सैक्रिफाइस करके, ये सब छोड़ के ये गाना बजाना में ही लोग इन्वॉल्व रहे हैं। तो दैट इज द थिंग आई वांट टू से, कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। सो यू बी वेरी केयरफुल एंड डिसाइड, क्योंकि एक 25-30 हजार, 40 हजार या 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख रुपया का इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद देख रहे हैं कि नहीं भाई इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, सो इट इज नॉट सजेस्टेड, इट इज वाइज। बहुत सोचिए, सोच के भाविया करियो काज, करियो भावियो ना, मतलब एग्जैक्टली इन बंगाली, यस तो यस गिव अ थॉट एंड देन यू डिसाइड एंड देन यू डू। राइट। और ये जल्दबाजी के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे कि लोग का बहुत जल्दबाजी है, मतलब गाने के लिए तो है ही, मैंने ऐसे देखा कि बहुत लोग आते कुछ नहीं जानते, लेकिन आते ही उनको राग सीखना है, जल्दबाजी तो हम लोगों का भी नहीं है। अभी देखिए ना, हम लोग जिस तरीके का गाना बजाना करने का कोशिश कर रहे हैं, कितना उसका प्रोपोर्शन में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है। दिस इज समथिंग प्रोबेबली नॉट वेरी गुड थिंग टू से इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो जल्दबाजी हम लोगों का भी नहीं है। अगर जल्दबाजी रहता तो हम लोग गाना बजाना छोड़ देते। अभी क्या मिलेगा उसके हिसाब से अगर हम करते, तो वो शाहिद जी, उस्ताद शाहिद परवेज खान साहब एक बताए थे कि अगर रिटर्न चाहते हो तो ये तुम्हारा सौदा है, ये तुम बिजनेस कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। ये इतना इसको डेप्थ है ये बात में, जो गहराई है ये बात में। तो रिटर्न कब मिलेगा? अभी इन्वेस्ट कर दिया मैं, प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट कब मिलेगा? ये बैंक में इंटरेस्ट नहीं है, ये है ना। तो टाइम लगता है। और अनलाइक अदर फील्ड्स, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, अभी एक कहो ना प्यारा हो गया तो ऋतिक रोशन बन गया, इसमें ऐसी मैजिक नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा मैजिक नहीं है कि एक कहो ना प्यारा हो गया और ऋतिक रोशन बन गए। तो इसमें
अभी अली अकबर खान साहब का एक कोट था कि 10 साल लगता है तो तुम अपने को प्लीज कर सकते हो. इफ यू इट टेक्स 20 years टू प्लीज द ऑडियंस, इट टेक्स 30 years टू प्रोबेबली. मतलब निरंतर continuous practice and continuous dedication, involvement, समर्पण, with that is the biggest if clause. अगर वो है तो 30 years Right. या 40 year लगता है to please your guru, and then the entire life goes to please the God, Almighty God. तो Yes. ये बड़े बड़े लोगों की बात सुनते हैं हम क्या बोल रहे हैं, लोगों को क्या करना है, हम लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं और सुन रहे हैं ये सब बात Right. में रख करके इसको हम देखिए. विलायत खान साहब को इंटरव्यू देखिए, जो वो भारत सितार सम्राट करके आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में मिलेगा. तो मैंने जीत गया या हार गया वो मुझे पता नहीं, मुझे मरे दम तक मुझे यही पता रहना चाहिए कि मैं कितना कोशिश करता चला गया, जंग करता चला गया. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू लिसन टू दिस ग्रेट मैन, ग्रेट आर्टिस्ट, अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, जो भी बड़े बड़े सब लोग जो बड़े हुए, इन लोगों का इंटरव्यू सुनिए, इन लोगों का बात सुनिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. ये जल्दबाजी से ये होने वाला नहीं है, जल्दबाजी होने से सब बिगड़ जाएगा. जी. And yes, thank you everyone, and thank you Ramprapunno for joining my conversation for episode 3. And definitely आप अगर इस सेशन के बाद आपका लिंक थोड़ा कमेंट सेक्शन में शेयर कर दे. मैं थोड़ी इस बारे में मैं थोड़ी कम ही ज्ञान है मेरा कि हम अभी शेयर ना करें. मैं बाद में डेफिनेटली आई विल शेयर योर लिंक हियर. सो जी जी. Two things So, I want to tell my thanks and gratitude to you for remembering me, for inviting me to your this initiative and these interactive sessions. I am really feeling blessed, and so many people, so many friends and well wishers have joined online. So my thanks to you for making this possible. And my contact details is very easy. My website is my first name, which you can see in the screen, my first name.com. That's it, very simple. Yeah. Okay. So ramprapunno.com, right? Ramprapunno.com, right? Yes. Your website name? Yes. Okay. Yes. Okay. So, okay, thank you everyone for joining me and joining us, and please share the live. And thank you Ramprapunno. I'm very much honored that you you have joined our session, and thank you everyone for joining us. And on next Wednesday, I will try definitely to bring someone special. Thank you, and see you on the next week. Namaskar Ramprapunno. Namaskar.